भारत के मित्रों को हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 77वां स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। यह दिन हम सबके लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह प्रसन्नता और गर्व की बात है कि कस्बों और गांवों में, यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है। अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी। जब तिरंगा फहराया जाता था तब हमें लगता था जैसे हमारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारे मन में गूंजते रहते थे। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्वों से जुड़ी देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा हैं जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। What we celebrate on Independence Day is the fact that we are part of a great democracy. Each of us has many identities, apart from caste, creed, language, and region. We are also identified with our families and professions. But there is one identity that is above all. That is our identity as citizens of India. Each one of us is an equal citizen. Each one of us has an equal opportunity, equal rights, and equal duties in this land. But it was not always so. India is the mother of democracy, and since ancient times we had democratic institutions functioning at the grassroots. But long years of colonial rule wiped them out. On 15th August 1947, the nation woke up to a new dawn. We not only won freedom from foreign rule, but also the freedom to rewrite our destiny. With our independence began the era of foreign rulers withdrawing from many colonies, and colonialism drew close to its end. What is special about our freedom struggle is not only the fact that its objective was achieved, but also how it was fought. Under the leadership of Mahatma Gandhi and a galaxy of extraordinary visionary leaders, our national movement was animated by a unique set of ideals. Gandhiji and others rekindled the soul of India and helped the nation rediscover its civilizational values. Following India's shining example, truth and non-violence, the cornerstone of our resistance, has been successfully employed in many political struggles around the world. On the eve of Independence Day, I joined my fellow citizens in paying grateful tribute to the known and unknown freedom fighters whose sacrifices have made it possible for India to regain its rightful place in the comity of nations. Great women freedom fighters like Matangini Hasira and Kanakalata Barua laid down their lives for Bharat Mata. Ma Kasturba matched the father of the nation, Mahatma Gandhi, every step of the way on the difficult path of Satyagraha. Many great women leaders like Sarojini Naidu, Ammu Swaminathan, Rama Devi, Aruna Asaf Ali, and Sucheta Kriplani had set inspiring ideals for all future generations of women to serve the nation and the society with self-confidence. Today, women are contributing extensively in every field of development and service to the country and are enhancing the nation's pride.
Today, our women have made their special place in many such fields in which their participation was unimaginable a few decades ago. I'm happy to note that the economic empowerment of women is being given special focus in our country. Economic empowerment strengthens the position of women in the family and society. I urge all fellow citizens to give priority to women empowerment. I would like our sisters and daughters to overcome challenges with courage and move ahead in life. Development of women was among the ideals of our freedom struggle. प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है। यह हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथोचित स्थान बनाया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है। अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें एक नए विश्वास तथा गौरव का भाव देखा है। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। चूंकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्रों में हो रहे निर्णयों को न्याय संगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ G20 के सदस्य देश उन मोर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता में एक नई बात यह है कि डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गतिविधि में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपने तरह का पहला अभियान चलाया गया है। उदाहरण के लिए यह देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में G20 से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। G20 से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। Dear fellow citizens, this enthusiasm, along with a sense of empowerment, is possible because the nation has been taking great strides on all fronts. India's economy has proven to be not only resilient during turbulent times, but is also a beacon of hope for others. The world economy is passing through a delicate stage as the pandemic has been followed by international events that have added to the air of uncertainty. Yet, the government has been able to navigate the stormy waters very well. India has converted challenges into opportunities and has recorded high GDP growth. Our Annadata farmers have contributed significantly to our economic growth. The nation feels indebted to them. Inflation at the global level remains a cause for worry. But in India, the government and the Reserve Bank have managed to contain it. The government has succeeded in protecting the common people from high inflation while also providing a more extensive security cover to the poor. The world looks up to India for global economic growth. The continued economic progress is driven by a two-pronged strategy. On the one hand, there is a sustained push to unleash the forces of enterprise by making it easier to do business and generate job opportunities. On the other, proactive and expanded welfare initiatives for the needy have been taken in various domains. Giving priority to the deprived remains the focus of our policies and actions that have lifted a large number of people out of poverty in the last decade. Similarly, there are specific programs to improve the conditions of tribals and encourage them to join the journey of progress. I appeal to our tribal brothers and sisters to enrich their traditions while embracing modernity. I'm happy to note that along with economic growth, human development concerns have also been accorded high priority. Having been a teacher also, I have realized that education is the greatest tool of social empowerment. The National Education Policy of 2020 has started making a difference. From my interactions with students as well as educationists at various levels,
I gather that the learning process has become more flexible. The visionary policy, which aims to merge ancient values with modern skills, will bring in unprecedented changes in the education sector over the years, leading to a great transformation of the nation. India's economic progress is powered by the dreams of its people, particularly the young generation, for whom limitless opportunities have opened up. From startups to sports, our youth have explored new horizons of excellence. आज के नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के क्षितिज असीम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस वर्ष इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और कार्यक्रम के अनुसार उसका विक्रम नामक लैंडर तथा प्रज्ञान नामक रोवर अगले कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर उतरेंगे। हम सभी के लिए वह गौरव का क्षण होगा और मुझे भी उस पल का इंतजार है। चंद्रमा का अभियान अंतरिक्ष के हमारे भावी कार्यक्रमों के लिए केवल एक सीढ़ी है। हमें बहुत आगे जाना है। अंतरिक्ष अभियान में ही नहीं बल्कि धरती पर भी हमारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जा रहा है। यह फाउंडेशन हमारे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को आधार प्रदान करेगा, उन्हें विकसित करेगा तथा आगे ले जाएगा। प्यारे देशवासियों, ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे लिए वे मानवता के विकास के साधन हैं। एक क्षेत्र जिस पर पूरी विश्व के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को और अधिक तत्परता से ध्यान देना चाहिए, वह है जलवायु परिवर्तन। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं। देश के कुछ हिस्सों में असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है। कुछ स्थान सूखे की मार झेलते हैं। इन सब का एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जाता है। अतः पर्यावरण के हित में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व लक्ष्यों को प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान को भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व समुदाय को हमने लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया है। Dear fellow citizens, extreme weather seasons affect all, but their impact is far more severe on the poor and the marginalized. Cities and hilly terrains especially need to be made more resilient. The larger point here is that the culture of greed takes the world away from nature. We now realize the dire need to return to our roots. I know that there are still many tribal communities who live very close to nature and in harmony with it. Their values and lifestyle offer invaluable lessons for climate action. The secret of the survival of the tribal communities through the ages can be summarized in one word. That single word is empathy. They have empathy for all Mother Nature's fellow children, flora and fauna alike. Sometimes, however, the world seems to be suffering from a deficit of empathy. But history shows that such periods are only aberrations, and kindness is a fundamental nature. It is my experience that women have empathy in greater measure, and they show the way when humanity goes astray. Our country has entered the Amrit Kaal with new resolutions, and we are moving forward, making India an inclusive and developed nation by the year 2047. Let us all take a pledge to perform a fundamental duty, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. प्यारे देशवासियों, हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है। संविधान का प्रस्तावना में हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श समाहित हैं। आइए हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ें। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं पुनः आप सबको विशेष रूप से सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना के जवानों, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी बलों
एवं पुलिस के जवानों तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को बधाई देते हैं। सभी प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। I'm on a working day to be here on this. मैं शपथ लेता हूँ कि भारत को विकसित देश बनाएंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहेंगे, नागरिक के कर्तव्य निभाएंगे, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का सपना साकार करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Thank you for taking the pledge, and I hope you will take the time to think about the meaning of the pledge you have made, the ideas and the vision that you have committed yourself to, and will work towards realizing it. I want to especially thank all the young and the youth who are here, who have taken the pledge, who have taken the time to come here to mull over it. Thank you very much for being here. Friends, the partition of India was a very painful event in the history of our nation. When we celebrate Independence Day, it's a happy and joyous occasion. We commemorate all those who have lost their lives for the cause of the nation. But there is also the horrors of partition. And as the Prime Minister rightly said, the partition's pain can never be forgotten. Millions of our brothers and sisters were displaced. Many lost their lives due to mindless hate and violence. In memory of the struggles and sacrifices of our people, the 14th of August is being observed as a Partition Horrors Remembrance Day. This is a very painful event. Many of the youth may not be aware of it. So there will be a short presentation during the course of today's program for you to see, mull over the horrors of partition and resolve that this shall never befall our nation and this shall never befall our people. On behalf of the embassy, I want to thank all of you for your presence here. We at the embassy are a home away from home for all of you. The community is a growing community. You have been great partners in the last year and a half. We have had many occasions to celebrate things together. I want to especially thank you for your contribution when our Honorable Prime Minister was here in May last year. We had a wonderful interaction of the Indian community with the Honorable Prime Minister, and you all were great partners. Any issues of our students who are increasing in number, we have 45,000 Indian students in Germany, is a matter of great focus for us at the embassy. This is a growing community and we are very happy that our students are doing well. We remain engaged with the student community through the Indian student associations in various cities. I think the students who are here, who are participating here, do reach out to us on any issue affecting students. We remain committed. I think our consular and visa services and our passport services are also very active. We are open to receiving your suggestions in this regard. Please do reach out to us. And for any need for any citizen in distress, of course, we are open 24/7 to receive calls for any distress situation. We hope this does not befall, but we are ready to serve. Once again, thank you very much for being here.